Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivardhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava
Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naran Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So we are in this chapter of the Bhagavad Gita, in the Srimad Bhagavatam, where the talks are going on between Mahatma Vidur and Maitreya Rishi. And now Maitreya Rishi has started to explain how the Lord creates this material energy and how he incarnates as Purusha avatars, as Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Shirodakshai Vishnu. But before that, he is explaining about how this material creation takes place, how it looks as if everything is happening on its own, although the Lord creates this material energy. But how this material energy comes into motion, how everything is created, all these aspects will be discussing, and all these aspects Maitreya Rishi will be talking about. So today we'll be starting with Shloka number 28 of the 5th chapter of the 3rd Canto of Srimad Bhagavatam. Sopyam Shiguna Kalatma Bhagavad Drishti Gocharaha Atmanam Vyakarodatma Vishwasyas Vishwasyasya Shikshaya. Sopyam Shuguna Kalatma Bhagavad Drishti Gocharaha Atmanam Vyakarodatma Vishwasyasya Sisrikshaya. Translation. Thereafter, the Mahat Tattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the would-be entities. The Mahat Tattva is chiefly in the mode of ignorance and it generates the false ego. It is plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness of the creative principles and time for fructification. Now you see, what is Maitreya Rishi saying here? So he is saying that this Mahat Tattva is talking about the Mahat Tattva. So he's saying that Sopyam Shuguna Kalatma. So api Ansh Guna Kal Atma. So this is an Ansha of the Lord. This is an energy of the Lord. Sometimes it is also called expansion of the Lord because Mahat Tattva represents the Vishwarupa of the Lord. Although it is imaginary, but sometimes this Mahat Tattva or this material energy is also considered to be expansion of the Lord. So Kal Atma, and this time energy it separates the spiritual world from this material world, which in the beginning it is in the form of Mahat Tattva. So this material energy in the beginning is in the form of Mahat Tattva. And what is the difference between spiritual creation and material creation? So that is time. So Bhagavad Drishti Gocharaha. Bhagavad Drishti. Drishti means the glance of the Lord. So Bhagavad Drishti Gocharaha.
So this Mahat Tattva is agitated. It becomes active when the Lord glances over this material energy. So when the Lord glances over this material energy becomes activated. We discussed this in the previous session also. And Atmanam Vyakarodhatma Vishwasya Sisrikshaya. And because of this differentiation between the spiritual world and the material world, because material world is this Mahat Tattva is generated to bind the living entities into this material world, right? It is generated to bind the living entities. It is not generated for liberated souls. This Mahat Tattva is generated for conditioned souls who want to go against the Lord, those who are rebellious against the Lord. So it is generated for them. So that is why it is considered to be in mode of ignorance, because it puts the living entities in forgetfulness. So Sisrikshaya means the living entities, they forget the Lord when they come in touch with this Mahat Tattva or this material energy. And how this forgetfulness takes place? So the forgetfulness takes place because of false ego. Because of false ego. So false ego, because you see, the body which we see, this gross material body, it is made up of 5 elements: earth, water, fire, air, ether. Okay. And then comes the subtle body, which is made up of mind, intelligence, and false ego. And the soul is trapped within this subtle body, which is made up of mind, intelligence, and false ego. Okay. So false ego is the, you can say it is the element which makes the living entity believe or identify with this material mind and material intelligence. In the spiritual world, because ego means identification. So as soon as the living entity, there's a very beautiful example given in this connection, that when raindrops fall from sky, the raindrop is pure. But as soon as the raindrop comes in touch with earth, these raindrops, they develop muddy quality, isn't it? So raindrops do not remain pure once once these raindrops come in touch with mud on earth, they become muddy. Similarly, the pure living entity in his original ego, he knows that he is part and parcel of Krishna. But as soon as the living entity, just like this raindrop, as soon as it comes in touch with mud, it becomes muddy. Similarly, as soon as the original living entity, he comes in touch with Mahat Tattva, this material nature, immediately his original ego or his real ego gets converted into false ego. Right? So now, ego means identification. So in the spiritual world, we all identify ourselves as part and parcel of Krishna because we are in our original consciousness. That is why Krishna consciousness means to revive our original consciousness. But in this material world, we develop false ego. So false consciousness comes. So what is false ego? We start identifying with this material mind and material intelligence because we develop false ego. So we start identifying ourselves with this material world. We start thinking we are a part of this material world and we develop material bodies.
Now, who gives material bodies? We discussed in the previous session. It is awarded by the material nature. Okay. So under this impression, we develop false ego. And because of false ego, we start identifying with the body. Right. And under false ego, we develop false mind and false intelligence also. So that is then our subtle body, the subtle body, it's a counterpart of the soul. But under the influence of Mahat Tattva, this subtle body becomes impure. And why it becomes impure? Because the soul, because of false ego, starts identifying with material body. Right. So who acts as the interface? Who acts as the intermediate? Who acts as the interface between us and this material body? That is Mahat Tattva. Mahat Tattva is the cause because of which we develop false ego. Right? It's the Mahat Tattva, is the material energy because of which, as soon as we come in touch with material energy, we develop false ego. And why we come in touch with material energy? Because we want to give up association of Krishna, because we want to go against Krishna, because of misuse of our free will, because of misuse of our minute freedom given to us by Krishna. When we misuse this freedom, we come in touch with material energy, and by the influence of material energy, we develop false ego, because of which we start identifying with matter or material body, and our whole subtle body becomes contaminated. So because of false ego, we develop false intelligence and false mind. So mind also starts to generate desires for sense gratification of the body. In the spiritual world, mind generates thoughts of serving Krishna. But in the material world, mind generates thoughts of sense gratification. Right? In the spiritual world, intelligence is used for enhancing our service to Krishna. But in the material world, intelligence is used for enhancing our sense gratification. So this is how whole subtle body becomes contaminated because of false ego. And the via medium is Mahat Tattva, right? So because of false ego, we forget Krishna. We lose our identification, our original identification, and we are put into forgetfulness. And this false ego, it binds us into this material world. Our real ego promotes us back into spiritual world. So that is why the process of Krishna consciousness is to purify ourselves. What is the meaning of purification? The meaning of purification is to revive our original ego, our original identification, our original consciousness, right? So this false ego, it binds us into this material creation. And that is why Krishna, he keeps, as we have discussed in the previous session also, he keeps creating and he keeps destroying this material energy, and he keeps giving the living entities chance to come back to him. That's why he keeps destroying and he keeps creating this material creation at regular intervals. That is the root cause of why he destroys this material energy and he keeps creating this material energy or creation. So he keeps giving opportunity to the conditioned souls so that they can come back to him. But because he has given us minute independence, minute freedom, he does not interfere with our minute freedom, because when we misuse that freedom, it's then when we come in touch with material energy, and the whole process starts of how we get influenced by this material energy, develop false ego, false mind, false intelligence, and material bodies.
So the whole process of Krishna consciousness is to revive our original ego, which is Krishna consciousness. That I am a spirit soul, I am a part and parcel of Krishna. Now, text 29, Shloka number 29. Mahattvatvad vikurvanat aham tattvam vyajayata karyakaran kartatma bhutendriya manomaya vaikarikastejasascha tamasaschetyaham tridha mahattvatvad vikurvanat aham tattvam vyajayata karyakaran kartatma bhutendriya manomaya vaikarikastejasascha tamasaschetyaham tridha. Translation. Mahat Tattva, or the great causal truth, transforms into false ego, which is manifested in three phases: cause, effect, and the doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. You see, how because of this false ego we are bound into this material energy is mentioned here by Maitreya Rishi. So what is he saying? That Mahat Tattva Vikurvanat, this Mahat Tattva Vikurvanat, it transforms itself. Aham Tattvam Vyajayata. And because of this Mahat Tattva, because of action of Mahat Tattva, we develop Aham. Aham means false ego. And Karya Karan Kartatma. And because of this, we get affected by Karya Karan Karta. So Karya, that means the actions of this material energy, Karan, the cause of this material energy, and Karta, the doer. So these are the influences on the spirit soul. Bhutendriya Manomaya. And because of this, we develop senses, mind, and the senses and the mind because of these material ingredients which develop because of Mahat Tattva. Vaikarikas Taijasascha Tamasaschetyaham Tridha. And this Mahat Tattva, or this, so because of Mahat Tattva, false ego develops. And this false ego then, when it associates with these three modes, you see, Vaikarikas Taijasascha Tamasascha iti aham tridha. So this aham means ahankar. So this false ego gets influenced by these three modes: Sattva Guna, mode of goodness; Rajoguna, mode of passion; and Tamoguna, mode of ignorance. So this false ego of the living entity, it gets influenced by these three modes, right? And these three modes influence a living entity, because of which he starts to develop his identity, which is material in nature. Because these three modes are all material modes, they are not spiritual mode. Spiritual mode is called Vishuddha Sattva, that is called pure mode of goodness. But material world, goodness, passion, and ignorance, all three are material. Our goal is not to associate with goodness also. Our goal is to rise above even goodness or Sattva Guna. Many times people think that the goal of life is to develop or to associate with Sattva Guna or goodness. No, that is not the goal of life. The goal of life is to transcend even
sattva guna or mode of goodness. Right? So that is what here Maitreya Rishi is saying. So in the spiritual world, when the living entity is in association with Shuddha Sattva, Shuddha Sattva is also called Vasudeva Sattva. So when we are in association with pure mode of goodness, which is called Vishuddha Sattva or Shuddha Sattva, what is our consciousness? That I am an eternal servant of Krishna. That is our, when we are in real ego, when ego is not, it has not become false. When we are in our original consciousness or original identity, then we know that I am a part and parcel of Krishna. I am an eternal servant of Krishna. Right? So those living entities who are in this consciousness, they are always in the spiritual world in Vaikuntha Loka. They never fall down. Those living entities who are in association with Vishuddha Sattva or Shuddha Sattva or in pure mode of goodness, they are living in Vaikuntha existence. So this material creation is not meant for living entities who are in association with mode of pure goodness or Vishuddha Sattva. And these living entities are called Nitya Mukta or Nitya Siddha. Right? They have nothing to do with this material creation. They are always in the spiritual creation in Vaikuntha. This material creation is meant for the second kind of living entity who are called Nitya Baddha, who misuse their freedom, they rebel against Krishna, and because of that, they come in touch with this Mahat Tattva, this material energy, and this material energy, because of this association with material energy, they develop false ego. Right? So this false ego, it is manifested in this material world in association of three modes. Sometimes this false ego of the living entity gets influenced by, because false ego is what? It's the false ego because of which you are in goodness or passion or ignorance. False ego means your consciousness. Your consciousness is directly influenced by false ego. So whichever association you have, based on that, your false ego develops. So when false ego comes in under the influence of mode of goodness, material mode of goodness, or you can say sattva guna, then a person, he starts to speculate. False ego, because when we are in real ego, we are in Vishuddha Sattva platform, pure mode of goodness or spiritual mode of goodness. So, but in material energy, in the Mahat Tattva, there is material mode of goodness, passion, and ignorance. Okay. So when the false ego associates with mode of goodness of material world, then a living entity starts to think that he is God. He starts to develop qualities of impersonalist behavior. He starts to speculate. And they are not able to understand pure devotional service. So in goodness also, those people who are in mode of goodness, they also cannot understand bhakti. To understand bhakti, a person has to transcend even mode of goodness. Only then he can understand pure bhakti or pure devotion to Krishna. So those who are in goodness, they cannot understand bhakti. They try to do good things, and then finally they come under trap of that everyone is God. Right? Everyone is not
they develop this speculative behavior. Then those who are influenced by the mode of passion, they engage in sense gratification. Right? Mode of passion means sense gratification, desire to enjoy matter. And because of that false behavior of identifying with matter and associating with matter, and because of materialistic tendency, they sometimes fall trap into altruistic activities or material welfare activities. Right? They think that they have been appointed to do good to others. They are the agents who will make this world a better place to live. They are the people who will help others, and they are the people who will make this, who will uh, help others by doing some material charity or material welfare work. But all this comes under false ego in mode of passion, because ultimately it is all driven by false ego. Material welfare activities or material activities, all material activities are driven by false ego. So even material charity or material good well-being, to think of well-being of people, this is also driven by false ego, because actually he is not helping people, he's entangling the people into this material world. Real help is what? To give people Krishna consciousness, to make devotees. But that he does not do. He thinks that by giving them some material things, he is helping them. So this is all mental concoction in material mode of passion. And then when false ego, so false ego in goodness means he thinks that everyone is God. False ego in passion means he tries to do sense gratification, and one form of sense gratification is to help others, to gratify senses of others. And then finally, the lowest influence on the false ego is when false ego associates with mode of ignorance. And then a person is centered, all his activities are centered around body, just like animals. So a person is on animalistic platform. So that is why Krishna comes and gives Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Why Krishna has spoken Bhagavatam to Uddhav and Maitreya Rishi? Why Krishna has spoken the Bhagavad Gita to Arjun? So that people can understand the science of Krishna consciousness, and they can understand and they can revive their original ego, which is that I am a part and parcel of Krishna, I am eternal servant of Krishna. Whole Bhagavad Gita, you see, what is Krishna saying? Arjun, serve me, become my devotee. I am the supreme God. Whole Bhagavad Gita is this only. Srimad Bhagavatam is same thing. Become a devotee of Krishna. So both the scriptures are meant to revive our original consciousness, our original ego, which is Krishna consciousness. Now, text 30, shloka number 30. Aham tattvad vikurvanan mano vaikarikadabhut vaikarikascha ye deva अर्थाभिव्यंजनम यतः अहम तत्वाद् विकुर्वाणाम मनो वैकारिकादभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः. Translation: the false ego is transformed into mind by interaction with the modes of goodness. All the demigods who control the phenomenon world are also products of the same principle, namely the interaction of false ego and the mode of goodness. You see, so as we discussed in the previous shloka also,
when the false ego associates with mode of goodness, living entity develops desire to do good to others or to help others, or sometimes he thinks that everyone is God, I am God, all these kinds of thinking, mental speculation. Basically, he enters into the platform of mental speculation. There's no reality, but he starts speculating. You see, so aham tattvad vikurvana manovayakarikad bhoot. So this material mind develops by association of false ego with mode of goodness. Vaikarikashchaye deva, and the demigods are also under the influence of material mode of goodness. Demigods are also not liberated souls. All the demigods, of course, those who are pure devotees, they are liberated. But most of the demigods, they are not liberated souls. They also have developed, their body has been developed because of their false ego associating with mode of goodness. That's what is mentioned here in this shloka. Vaikarikashchaye deva arthabhivyanjanam yataha. So when material mode of when this false ego associates with material mode of goodness, that's when the mental speculation happens. And demigods are also products of false ego associating with material mode of goodness. So they are in goodness, but in material mode of goodness. They are not liberated. For liberation, you have to develop Vishuddha Sattva platform. False ego must come under the influence of pure mode of goodness or spiritual mode of goodness. So here we are talking about material mode of goodness. But spiritual world means liberation, means to come in under the influence of spiritual mode of goodness, which is called Vishuddha Sattva. Now text 31, shloka number 31. Tejasanindriyanyeva jnana karma mayani cha. Tejasanindriyanyeva jnana karma mayani cha. Translation: the senses are certainly products of the mode of passion and false ego, and therefore philosophical speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. You see. So what is here? What is mentioned by Maitreya Rishi here? Tejasa. Tejasa means passion. Mode of Rajoguna. Rajoguna means Tejasa. Indriyani eva. So because of when false ego associates with mode of passion, Rajoguna, then the senses develop. Sense gratificatory desires develop, and because of that we develop material senses. Jnana karma mayani cha. And Gyan, material knowledge, material work. And Mayani means this tendency to think that I have to gratify my senses, I have to do work for sense gratification. All these different feelings, these different speculative behavior develops under the association of false ego with mode of goodness. Mode of passion. So mode of passion develops within us a desire for sense gratification. So these material senses develop because of the false ego associating with mode of passion. Right? So this godless behavior that we have, that we forget Krishna, is because of false ego. And this false ego, as soon as this false ego comes in touch with material mode of passion, it develops godless behavior, and we start working for sense gratification.
He wants to become independent of Krishna and wants to enjoy sense gratification on his own. And then when he becomes frustrated with all these attempts, because you can never be satisfied by sense gratification, because ultimately you are part and parcel of Krishna. So when a person becomes completely frustrated with all these attempts, then what happens? He becomes a speculator for higher level of sense gratification and starts to tell everyone that he is God, everyone is God, right? To, to think that I am also God. So this is the biggest trap of illusory energy, to think that I am God. So until unless a person gives up speculation, you see, this mental speculation binds us here in this material world because it is on the platform of mind. So till we rise to spiritual platform, and the only way to rise to spiritual platform is to hear from a pure devotee. Shravanam. Krishna can never be realized by speculation. Krishna can only be realized by hearing from a pure Vaishnava, a pure devotee. Then we realize Krishna. Otherwise, we fall trap to all these sense gratificatory things. Any other desire apart from desire to serve Krishna is sense gratification. So that is what we are seeing here in these shlokas. You can like the video, you can comment. Those who have not subscribed, they can subscribe to our channel, and you can also share with everyone these Bhagavatam sessions. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में, और प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु तत्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर के बीच संवाद चल रहा है। मैत्रेय ऋषि अब वो महात्मा विदुर के जैसा उन्होंने निवेदन किया था उस हिसाब से इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान ने कैसे की और किस प्रकार इस सृष्टि में अलग अलग रचनात्मक व्यवहार होता है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। तो आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 28वें श्लोक से। तो 28वां श्लोक, सोप्यंश गुण कालात्मा भगवदृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सृक्षया। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवदृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सृक्षया। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Thereafter, the Mahat Tattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the would-be entities. The Mahat Tattva is chiefly in the mode of ignorance and it generates the false ego. It is a plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness of creative principles and time for fructification. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि उसके बाद महत तत्व अलग अलग जीव जंतुओं के सृजन का कारण बना और इसके कारण ही तमोगुण का व्यवहार पैदा होता है और इसके कारण अहंकार, जीव के अंदर अहंकार की भावना आती है और समय इसको आध्यात्मिक जगत से अलग करता है। अब आप देखिए, सोप्यंश गुण काल आत्मा, सो अपि अंश गुण काल आत्मा। तो कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि ये भगवान की ही शक्ति है, ये जो महत तत्व है। हमने जैसा चर्चा किया था अपने पिछले सत्र में भी, महत तत्व के बारे में हमने देखा था कि जो महत तत्व है, ये जो पूरी प्रकृति है, जब ये पूरी तरह से गति में नहीं आती है तो इसे महत तत्व कहते हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, जड़ प्रकृति, ये प्रारंभ में महत तत्व के रूप में रहती है। तो ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही अंश है। कई बार इसे भगवान का विस्तार भी माना जाता है, इसी को भगवान का विश्व रूप भी माना गया है। तो ये भी एक भगवान की ही शक्ति है, कई बार लोग इसे विस्तार भी कहते हैं। और भगवत दृष्टि गोचरः, तो दृष्टि, जैसा हमने चर्चा किया था अपने पिछले सत्र में भी, कि जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, जब उनकी दृष्टि पड़ती है इस माया शक्ति के ऊपर, तो ये जो माया शक्ति है और ये जो जड़ जड़ प्रकृति है, ये गर्भवती हो जाती है भगवान की दृष्टि से और इसमें जीव जंतु पैदा होते हैं। ठीक है, और यहीं पे हमने चर्चा किया था कि प्रारंभ में ये जो जड़ प्रकृति है, ये महत तत्व के रूप में रहती है। ठीक है, तो विश्वस्य सृक्षया, तो जो जीव है उनके अंदर ये जो शुद्ध चेतना है वो अशुद्ध चेतना में परिवर्तित हो जाती है और जिसके कारण अहंकार पैदा होता है। ठीक है,
तो इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में कि जिस प्रकार एक बारिश की बूंद जो बिल्कुल शुद्ध है, वो जैसे ही पृथ्वी पर पृथ्वी के संपर्क में आती है, मिट्टी के संपर्क में आती है, तो ये जो बारिश की बूंद है वैसे तो शुद्ध है, लेकिन ये अपवित्र हो जाती है और ये कीचड़ का रूप ले लेती है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जो शुद्ध जीव है, वो जैसे ही इस महत तत्व के संपर्क में आता है, जैसे ही जीव यानी जीवात्मा जो शुद्ध है बिल्कुल, वो जैसे ही इस भौतिक जगत यानी महत तत्व के संपर्क में आती है, ये जीवात्मा, वैसे ही जीवात्मा अशुद्ध हो जाती है और हमारी जो शुद्ध चेतना है वो बदल के, हमारी जो शुद्ध चेतना है वो अहंकार में बदल जाती है। अहंकार का मतलब एक शुद्धकार, यानी एक अहंकार। अहंकार मतलब ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं, इसे अहंकार कहते हैं। और हमारा एक वास्तविक स्वरूप है, तो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाना और इस शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेना, उसे अहंकार कहते हैं। जबकि हमारी वास्तविक, तो अहंकार मतलब गलत पहचान, उसे अहंकार कहते हैं। एक हमारी शुद्ध पहचान भी, हमारी वास्तविक पहचान, हमारी शुद्ध पहचान भी है। वो क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है और भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। ये हमारी शुद्ध चेतना है। तो ये जो जड़ प्रकृति है, जो महत तत्व के रूप में रहती है, वो ही जीव को इस जड़ जगत में बांधती है। ठीक है? और इसके संपर्क में आने से ही हमारी जो शुद्ध चेतना है वो अशुद्ध चेतना बन जाती है और हम अहंकार, हमारे अंदर गलत पहचान बन जाती है जिसे अहंकार कहते हैं। हमारी जो वास्तविक पहचान है वो बदल के जड़ पहचान बन जाती। तब क्या होता है? तो हमारी जो शुद्ध चेतना है वो अशुद्ध चेतना बन जाती। तो जैसा हमने देखा है भगवत गीता में भी, हमारा जो शरीर है वो पंचभूत का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन पंचभूत का हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जो पंचभूत का शरीर है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो किसका बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार का। मन यानी अशुद्ध मन, अशुद्ध बुद्धि और अशुद्ध पहचान, जिसे अहंकार कहते हैं। और आत्मा इसके द्वारा, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। और आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के कारण इस जगत में फंसी हुई है। तो ये जो अहंकार है, इसके कारण क्या होता है? इस अहंकार के कारण हम इस शरीर के साथ पहचान बना लेते हैं। हम क्यों सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं? अहंकार के कारण, यानी अशुद्ध चेतना, या फिर हम कह सकते हैं गलत पहचान के कारण। गलत पहचान को ही अहंकार कहते हैं। तो क्योंकि हम इस शरीर से पहचान बना लेते हैं जिसे गलत है, गलत पहचान है हमारी, क्योंकि हमारी वास्तविक पहचान क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा और भगवान के नित्य दास हैं, नित्य अंश हैं। ठीक है? तो जब हम इस शरीर के साथ अपना, इस जड़ जगत के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, तो क्या होता है? हमारी मन और बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि हम इस शरीर से पहचान बना लिया हमने, जो कि हम है नहीं। तो फिर क्या होता है? मन, भाई, तो जीवात्मा की पहचान गलत बन जाती है। वो सोच वो ये शरीर को वो सोचती है कि मैं ये शरीर हूं। तो उस चक्कर में मन और बुद्धि भी दूषित हो जाते हैं।
वो भी ये सोचने लगते हैं कि हमें बस इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना है। तो जिस कारण हम इस जगत में फंसे हुए हैं वो है अहंकार या गलत पहचान। ठीक है। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, ये जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है, उसका मतलब है हमारी वास्तविक पहचान को वापस से जागृत करना, हमारी शुद्ध चेतना को वापस से जागृत करना। और इसीलिए भगवान बार बार इस सृष्टि की रचना करते हैं और इसका विनाश करते हैं, हम सबको मौका देने के लिए कि हम सब वापस से अपनी शुद्ध चेतना में आ जाएं। तो हमें बार बार वो मौका देते हैं, हमें बार बार वो सारी सुविधाएं देते हैं इस जड़ जगत में, लेकिन वो हमारी जो छोटी सी उन्हें स्वतंत्रता दी है उन्होंने हमको, जीवात्मा को, कि तुम तय कर सकते हो कि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है या फिर अपनी अ, अशुद्ध चेतना की सेवा करनी है, जिसे हम माया भी कहते हैं। तो वो हम हमेशा वो स्वतंत्रता हमें भगवान ने दी है, और उसके साथ भगवान अ, उसमें अड़ंगा नहीं डालते, और इसीलिए हम इस जगत में फंसे रहते हैं। वो स्वतंत्रता हमें दी गई है, या तो हम भगवान के दास बन जाए या फिर इस जड़ जगत के दास बन जाए। जब अपनी पहचान हम शरीर से बना लेते हैं तब इस जड़ जगत के हम दास बन जाते हैं, और जब हम अपनी वास्तविक पहचान को जागृत कर लेते हैं तो हम वापस से भगवान के दास बन जाते हैं। तो ये स्वतंत्रता हमारे पास सदा रहती है। 29वां श्लोक। महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहम तत्वं व्यजायत, कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः, वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा, महत्तत्वाद् विकुर्वाणाद् अहम तत्वं व्यजायत, कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः, वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। ट्रांसलेशन, अनुवाद। महत्तत्व और द ग्रेट causal truth transforms into false ego, which is manifested in three phases: cause, effect, and the doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं महात्मा विदुर से कि महत्तत्व अहंकार हमारी शुद्ध चेतना को अहंकार में बदल देता है, जिसके कारण हम स्वयं को इस सृष्टि का कारण और कर्ता मानते हैं, और ये सब मन की गतिविधियां हैं, और ये इंद्रिय तृप्ति और मानसिक गतिविधि में आती है। ये अहंकार तीन गुणों से संपर्क में आती है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं महत तत्वात् विकुर्वाणात् अहम तत्वं व्यजायत। तो महत तत्व के कारण, महत तत्व, जैसा हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि जो जीव है उसकी वास्तविक शुद्ध चेतना, विशुद्ध जो शुद्ध चेतना होती है वो अशुद्ध चेतना कैसे बन जाती है? वो बन जाती है इस महत तत्व के संपर्क में आने के कारण। हमारी जो वास्तविक चेतना है, हमारी जो वास्तविक पहचान है, वो गलत पहचान में बदल जाती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। तो अहम तत्वम, ये देखिए आप इस श्लोक में कह रहे हैं अहम तत्वम। तो ये अहंकार जो होता है वो बनता है महत तत्व के प्रभाव से।
तो कार्य कारण कर्तात्मा, और इसके कारण हम सोचने लगते हैं कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, है ना, मैं कारण हूं हर चीज का, मैंने बिजनेस किया, मैंने पैसा कमाया। ये सब इस वजह से आता है। भूतेंद्रिय मनोमय, और ये सब मनोमय, ये सारी जो गतिविधियां हैं ये इंद्रियों और मन के आयाम पे होती हैं, जैसा हम सब जानते हैं। तो वैकारिक तेजसश्च, और अंत में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि जो ये हमारा अहंकार है, जिसे हम गलत पहचान कहते हैं, वो इन तीन गुणों के संपर्क में आती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आप देखिए, तो मैत्रेय ऋषि यहाँ पर बहुत ही एक बहुत ही विस्तार में बता रहे हैं कि हमारी जो वास्तविक पहचान है वो क्या है, कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है, भगवान का दास है। ठीक है। और जो जीव इस चेतना में होते हैं वो कभी इस जड़ जगत में आते ही नहीं, वो हमेशा वैकुंठ में रहते हैं और उन्हें नित्य सिद्ध कहा जाता है। लेकिन जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, जिन्हें भगवान का स्वामित्व नहीं चाहते, जो जो स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं, जो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, वो इस जड़ जगत में आ जाते हैं, वही महत तत्व के संपर्क में आते हैं। और जैसे ही हमने जो उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार बारिश की बूंद जो है वो मिट्टी के संपर्क में आने से वो कीचड़ बन जाती है, उसी तरह जैसे ही हम इस महत तत्व के संपर्क में आते हैं, भगवान को जैसे ही भूलते हैं, या जैसे ही हमारी इच्छा होती है स्वामी बनने की, तो हम इस महत तत्व में प्रवेश करते हैं। और महत तत्व में प्रवेश करते ही, महत तत्व में प्रवेश करते ही हमारी जो वास्तविक पहचान है कि हम कृष्णा के अंश हैं, वो हमारी खत्म खत्म नहीं होती है। मतलब वो वास्तविक पहचान अहंकार में बदल जाती, गलत पहचान में बदल जाती, जो हमने अभी चर्चा किया था पिछले श्लोक में। और उसके कारण तो ये जो हमारी पहचान है, जो हमें पहचान बनाने की शक्ति है, जिसे हम तो गलत पहचान जब बन जाती है, जिसे अहंकार कहते हैं, तो उस अहंकार ही हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम शुद्ध चेतना में होते हैं, जब हम जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं, वो शुद्ध सत्व में होते हैं, शुद्ध सत्व गुण, उसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक सत्व गुण भी कहते हैं। वो वास्तविक सत्व गुण है। इस जड़ जगत में भी सत्व गुण होता है, लेकिन वो जड़ सत्व गुण है, वो भी हमें बांधता है। मुक्ति के लिए हम ये जड़ सत्व गुण से मुक्ति नहीं मिलती। कई बार लोगों को लगता है कि जड़ सत्व गुण से हमको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। वो वास्तविक विशुद्ध सत्व गुण कहते हैं उसको, जिससे हम मोक्ष मिलता है। उसको वासुदेव सत्व भी कहते हैं, विशुद्ध सत्व भी कहते हैं, शुद्ध सत्व भी कहते हैं। तो इस जड़ जगत में शुद्ध सत्व नहीं है। यहाँ पे तीन गुण हैं, जड़ सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण। ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो जब हम जड़ सत्व गुण के संपर्क में आते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत महान बन चुके हैं। ठीक है। और वो सोचता है कि मैं भी भगवान हूँ, सभी भगवान है। इस तरह का वो मानसिक गतिविधि हमारी शुरू हो जाती है, हम मानसिक आयाम पे आ जाते हैं। ठीक है। जब मनुष्य का की जो पहचान है, जिसे हम फॉल्स ईगो कहते हैं, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जब वो सत्वगुण के संपर्क में आती है तो मनुष्य मन की गतिविधि से ये सोचने लगता है कि सभी भगवान है, हमें लोगों का भला करना है, ये करना है, वो करना है। और वो कभी भक्ति को समझ नहीं पाते।
भक्ति को समझने के लिए हमें शुद्ध सत्व गुण में आना पड़ेगा। जड़ सत्व गुण से भक्ति नहीं समझ सकते, तो वो भक्ति को नहीं समझ पाते। कई बार तो वो भक्त लोगों की का उपहास भी कर देते हैं वो लोग जो जड़ सत्व गुण में रहते हैं। फिर जब हमारा जो अहंकार है वो रजोगुण के संपर्क में आता है, तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति के भाव में आ जाते हैं, हमें इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। ठीक है। और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति जब ये इंद्रिय तृप्ति एक और रूप ले लेती है। कौन सा रूप? तो लोगों को लगने लगता है कि मुझे ये माध्यम बनाया गया है कि मैं लोगों का भला कर सकूं। उन्हें पता नहीं है कि भला क्या होता है लोगों का। वो सोचने लगते हैं कि मैं लोगों का भला करूं, लोगों को भौतिक चीजें प्रदान करूं, दान करूं, भौतिकता। तो भौतिक रजोगुण के कारण, भौतिकता के कारण वो सोचते हैं कि लोगों को अ, जड़ तरीके से मदद करना, सहायता करना सहायता है। ठीक है। तो वो अपने आप को दानी, अपने आप सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही दुनिया को चलाऊंगा। इस तरह का, इस तरह की चीजें ये रजोगुण के संपर्क से आती हैं। वो सोचने लगते हैं कि मुझे बनाया गया है ये माध्यम कि मैं लोगों का भला कर सकूं, कल्याण कर सकूं। भगवान बनना चाहते हैं कहने का मतलब। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति का ही एक रूप है। ठीक है। क्योंकि वास्तविक सहायता तो कृष्ण है, कृष्ण के संपर्क से होती है। ये जड़ जगत में बांध रहे हैं वो बेसिकली लोगों को। वो सहायता क्या कर रहे हैं? वो जड़ जगत में बांध रहे हैं लोगों को, स्वयं भी बंध रहे हैं, लोगों को भी बांध रहे हैं। ना तो उनको मोक्ष मिलेगा ना लोगों को मोक्ष मिलेगा जिनको वो बांध रहे हैं। तो उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तविक सहायता क्या है। तो ये भी रजोगुण, जब अहंकार रजोगुण के संपर्क में आता है तब इस तरह का भाव बनता है। और फिर तमोगुण के संपर्क में जब अहंकार आता है तो मनुष्य पूर्णतः शारीरिक आयाम पे रहता है और एक तरीके से पशु जैसा जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए कृष्णा भगवत गीता और भागवत जो ये ग्रंथ हैं ये दे के जाते हैं ताकि मनुष्य जो है वो इसका प्रयोग करे और अपना जीवन सफल बनाए, सत्व गुण से भी ऊपर उठे, विशुद्ध सत्व आयाम पे पहुंचे, अपनी गलत पहचान जिसे अहंकार कहते हैं उससे वो वास्तविक पहचान में आ जाए, अपनी विशुद्ध चेतना को जागृत कर ले और भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम वापस चला जाए। इसके लिए भगवान भगवत गीता देते हैं। और इसीलिए आप देखिए पूरी भगवत गीता में क्या है, बस एक ही चीज है, अर्जुन मैं भगवान हूं, तुम मेरे भक्त हो, मेरी सेवा करो। तो बिना कृष्णा की सेवा के ये सब नहीं हो सकता। विशुद्ध सत्व का जो आयाम है वो कृष्णा की सेवा का आयाम है। जगत की सेवा ये रजोगुण है या जड़ सत्व गुण है, कृष्णा की सेवा विशुद्ध सत्व गुण है। 30वां श्लोक। अहम तत्वाद विकुर्वाणान मनो वैकारिकादभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। अहम तत्वाद विकुर्वाणान मनो वैकारिकादभूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। Translation: the false ego is transformed into mind by interaction with the mode of goodness. All the demigods who control the phenomenon world are also products of the same principle, namely the interaction of false ego and the mode of goodness. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। अहंकार, तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि अहंकार जो है वो मन, वो मानसिक गतिविधि में फंसता है सत्वगुण के संपर्क से। जितने भी देवी देवता हैं वो भी इसी के कारण प्रकट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि अहम तत्वाद विकुर्वाणान मनोवैकारिक आदभूत। तो जब अहंकार इस मन के मानसिक गतिविधि जो है वो इस जड़ सत्व गुण के वजह से होता है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जो देवी देवता हैं वो भी मानसिक आयाम पे ही होते हैं, वो भी सत्व गुण में होते हैं लेकिन जड़ सत्व गुण में होते हैं।
ठीक है, तो देवी देवता भी मुक्त आत्मा नहीं है, वो नित्य सिद्ध नहीं है, वो भी इस जड़ जगत में बंधे हुए हैं, लेकिन वो जड़ सत्व गुण में होते हैं, तो उनको देवी देवता बना दिया जाता है। लेकिन उनका भी यही लक्ष्य होता है कि हम कैसे भी विशुद्ध सत्व में आए, उसके बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। तो देवी देवता भी अहंकार जब जड़ सत्व गुण के प्रभाव में आता है, तो उसी के कारण देवी देवता भी बनते हैं। और यदि हम जड़ सत्व गुण में रहते हैं, तो हो सकता है कि हम देवी देवता के आयाम तक पहुंच जाएं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए तो हमें विशुद्ध सत्व ही चाहिए, बिना उसके मोक्ष नहीं मिल सकता। मुक्ति का एक ही मार्ग है, शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व। जब तक हम जड़ सत्व गुण में रहेंगे, हो सकता है हम देवी देवता बन जाए, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। अब 31वां श्लोक। तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च, तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। Translation: the senses are certainly products of the mode of passion in false ego, and therefore philosophical, speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of good passion. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो इंद्रियों का आयाम रजोगुण का आयाम है। जब अहंकार रजोगुण के संपर्क में आता है, और इससे हमारे जड़ कर्म और जड़ ज्ञान प्रकट होते हैं। अब आप देखिए, तो ये जो जड़ ज्ञान है, इसको कहते हैं भगवान से विमुख होना। जड़ ज्ञान का एक ही लक्ष्य होता है, हमें भगवान से विमुख करता है। ठीक है, तो जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है कि वो कौन है, ठीक है, तो वो पहचान उसकी बदल जाती है। वो शुद्ध पहचान से गलत पहचान की ओर बढ़ जाता है, और इस गलत पहचान को ही अहंकार कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य तब ये भूल जाता है, ये पूर्णतः विस्मृति हो जाती है, वो पूरी तरह से अपने स्वयं को इस शरीर के साथ पहचानने लगता है, और वो भूल जाता है कि वो कृष्णा का अंश है, उसे भगवान की सेवा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो उसे नहीं, उसकी चेतना में ये नहीं रहता, और वो कृष्णा से विमुख हो जाता है पूरी तरह, इंद्रिय तृप्ति कर के, और इसके कारण इंद्रिय तृप्ति उसके जीवन का लक्ष्य हो जाती है, और वो पूरी पूरी तरह से जड़ कर्म और जड़ इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, और इसमें कभी संतुष्टि तो मिल नहीं सकती। तो अंततः वो पूरी तरह से हताश हो जाता है, और बाद में किसी गलत संपर्क में आके वो ये सोचने लग जाता है कि मैं ही भगवान हूं। मायावादी बन जाता है। ठीक है, और यही माया का सबसे बड़ा हथियार होता है। माया शक्ति जो है, उसे इस आयाम पे ले आती है कि वो स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है, और वो सबसे बड़ा पतन होता है एक जीव का। तो इसे कहते हैं मानसिक आयाम, मन की गतिविधि, मन का वहम। मानसिक गतिविधि से कोई कृष्णा को नहीं समझ सकता। कृष्णा को समझने के लिए एकमात्र रास्ता है, यदि हम शुद्ध भक्त से कृष्णा के बारे में सुने, मन गढ़ंत तरीके से, मन के गढ़े हुए ज्ञान से हम कभी कृष्णा को नहीं समझ सकते। सिर्फ कृष्णा को सुनने का एक ही मार्ग है, और वो है श्रवणम। श्रवणम और कीर्तनम। तो वही यहाँ पर मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को बता रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक इस ज्ञान को पहुंचाइए, भागवत की कथा पे, ताकि वो लोग भी सुन सकें।
तो आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।